Let's continue now, beta. We were doing the definitions related to tide, so we will continue. There are a couple of definitions which are remaining. So first let us cover those definitions. This was the last definition which we did, beta. Mean high water springs and mean low water springs. Okay, so we are proceeding ahead now. The next one is mean high water neaps and mean low water neaps. Though we had discussed that also, but let's revise it once. Obtained from a table of tides which is contained on the navigational charts. Let's insert these couple of terms we have just done in the same diagram that we are continuing with. Here is mean low water spring level. Here we have inserted is the mean high water spring level. Obviously the height difference between the two is the spring range of tide. Mean high water spring also acts as the charted high water level, from where the height of objects which do not get submerged like lighthouse are measured. So charted height and elevations are measured with respect to mean high water spring. Okay, so that was the diagram of mean high water springs. Let's now proceed ahead to the next definition, mean high water neaps. Mean high water neaps and mean low water neaps, they are defined exactly the same way as mean high and low water springs, excepting that instead of measuring them at the spring tide, these are measured at the neap tide. The height of mean high water neaps is the average throughout the year of two successive high waters during those periods of 24 hours when the range of tide is at its least. You can see in this diagram, this level represents the mean high water neaps. Likewise, the height of the mean low water neaps is the average height obtained by two successive low waters during those periods of 24 hours when the range of tide is at its least. And this level in the diagram represents mean low water neap. Difference in the height between these two represents the neap range of tide, and the height of mean high water neap or mean low water neap can be obtained either from tide tables or from the table of levels given on the navigational chart. So this is also clear, beta. Any doubts anywhere? No, sir. Okay, very good. Let's see the diagram. Now we insert mean high water neaps and mean low water neaps in this diagram. Here is mean low water neaps level. This is mean high water neaps level. This represents then the neap range of tide. You can see here very clearly that the neap range is much lesser than the spring range. Mean sea level is the average level of the sea surface over a long period, normally 18.6 years, or the average level which would exist in the absence of tides. Now to work out this MSL, observations are made at the tidal stations. Average height of the surface of the sea at tide station is determined from hourly readings, and these hourly readings are then taken into account to work out the MSL. The hourly level sea level readings are taken with respect to a predetermined reference, usually the chart datum. You can see MSL inserted in this diagram here. We shall insert in the bigger diagram the way we have done for all other terms. This is also the datum for the reference of all land surveys.
So for all land surveys, this mean sea level is the reference. So it is the land survey datum as well. If you remember those yellow boards at any of the railway stations, big boards when at the beginning and end of the platform station, under the name of the railway station, you'll find height above sea level for that particular station. And that height above sea level is with respect to MSL or the mean sea level. So just go through these points beta one by one, take your time and let me know any doubts coming in the mind. So the average level of sea surface, इसको बताना सर. Okay. It says beta average level which would exist in the absence of tides. अब अगर किसी जगह पे टाइड्स भी नहीं आए, हाई टाइड लो टाइड नहीं है, वहाँ पे लेवल एक जैसा ही रहता है, जैसे हमने देखा था ब्लैक सी में था, तो वहाँ पे जो भी सी लेवल की हाइट होगी, ओके, एवरेज हाइट, the average is taken over what period of time? 18.6 years normally. 18.6 years के लिए हम चेक करते हैं कि हमारा जो सी लेवल है वो कौन सी लोकेशन में रहता है, and that is known as the mean sea level. Is it making sense बेटा? सर ये मीन सी लेवल का MHWS से कोई लेना देना नहीं है ना? कोई लेना देना नहीं है बेटा, इन दोनों का कोई कनेक्शन नहीं है. ओके. Okay, let's move ahead, see it in the bigger diagram. Let's insert MSL into this diagram. So here is the mean sea level in this diagram. Other terms we have already covered. Now this MSL is also the datum for land survey. So you can see it, MSL being the datum for the land survey as well. Okay, to explain you, make it more simple for you. Let us say आप इस particular port में आते हो और आप इस port में आके जो water level है उसे check करते हो. एक दिन आपने check किया तो water level was here at the red color line. Next day आपने check किया तो water level यहाँ पे, और every hour you keep on checking. Next hour you check, the water level is here. After 1 hour it is here, 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 here. The level will keep on changing if you keep on noting it down every hour for 18.6 years and then take a average or mean of all those readings. That is known as the mean sea level. Okay, let's move ahead to the next definition now. You see it, MSL being the datum for the land survey as well. HAT, highest astronomical tide. We started our discussion with LAT. Now we have come to its counterpart, the HAT. HAT is the highest level that can be expected to occur under average meteorological conditions and under any combination of astronomical conditions. You can see in this diagram, HAT level having been inserted. We'll see it in our bigger diagram and shall insert it there as well. HAT is taken as the datum reference for charted vertical clearances of bridges and overhead power cables. Now, please do not get confused between clearances and heights. For heights, the reference, charted heights, the reference is mean high water spring. For clearances, for vertical clearances, the reference is the HAT. So here we have a case of a bridge and overhead cable where we are talking of these clearances. We shall insert them in our diagram. Height of HAT above chart datum can be obtained from tide tables
as well as it's also documented in the table of levels on the chart. HAT is not the extreme highest level. Under certain exceptional meteorological conditions, the levels may go higher than the HAT. In that scenario, it is referred to as storm surge. In case of LAT, it was a negative surge. In case of HAT, it will be a storm surge. HAT are determined by inspecting predicted sea levels over a period of 18.6 year cycle. Okay, just go through these points beta one by one. Let me know your doubts. 18.6 में. Okay, good बेटा. So हमारा डाउट अब ये है कि ये 18.6 years ये पीरियड कहाँ से आया, राइट? यस सर. Right. कोई Okay. फेनोमेना है? हाँ बेटा, ये बड़े एक इंटरेस्टिंग चीज है. आपने सेलनैब में मून का चैप्टर किया है बेटा अभी? मून का चैप्टर डन, नॉट डन? नहीं सर. ओके, जब आप मून का चैप्टर करोगे बेटा, तो उस मून के चैप्टर में आपको पता चलेगा मून का जो ऑर्बिट है ना, ऑर्बिट ऑफ मून, इट इज टिल्टेड एट एन एंगल ऑफ 5 डिग्रीज टू द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ. एक तो अर्थ का ऑर्बिट है अराउंड द सन, इसको विजुअलाइज करना. जो मैं समझा रहा हूँ आपको थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा माइंड में, बट अच्छी बात यह है कि अगर ना भी समझ में आए तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, इससे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी. अगर आप ओरल में कोई पूछ भी ले और उसे ऐसे ही बता दो जैसे मैं बता रहा हूँ, इट इज़ इन ऑर्डर. सो एनीवे, ट्राई टू अंडरस्टैंड. अर्थ जो है ये सन के अराउंड घूम रही है. जो प्लेन है जिस पे अर्थ घूम रही है उसे इक्वेटोरियल प्लेन हम लोग बोलते हैं. इक्वेटोरियल प्लेन, अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन. अब जो मून है वो अर्थ के अराउंड घूम रहा है, दैट इज द प्लेन ऑफ मून्स ऑर्बिट. ये दोनों के दोनों जो प्लेन हैं ये एक लेवल में नहीं है, ये दोनों अलग अलग लेवल पे हैं. ये अगर अर्थ का प्लेन है तो मून का प्लेन ऐसे है. ओके, कितने एंगल पे है? 5 डिग्री के एंगल पे है, अप्रोक्सीमेटली 5 डिग्रीज एंगल पे है ये. इतनी बात समझ में आई बेटा? यस सर. ओके, अब ये 5 डिग्री एंगल पे चलते 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 मून जो है, देखो ये रहा मून का ऑर्बिट, 5 डिग्री पे टिल्टेड है ये. किसी टाइम पे मून ऑर्बिट में यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा. मून ऊपर नीचे जाता रहता है. कभी ये अर्थ के ऑर्बिट से ऊपर चला जाता है, कभी ये अर्थ के ऑर्बिट से नीचे चला जाता है. अब ये पूरा साइकिल घूमने में मून 18.6 ईयर्स का टाइम लेता है. मतलब अपने ऑर्बिट की जो लोकेशन है इसमें ऊपर जाना और नीचे आना, इसमें मून 18.6 ईयर्स का टाइम लेता है. ओके, सो 18.6 ईयर्स का टाइम जो है ये मून लेता है. इसीलिए हमारे टाइड्स की जो फिनोमिना हैं वो 18.6 ईयर के पीरियड में मेजर किए जाते हैं. रीज़न इसका ये है कि 18.6 ईयर के बाद एक साइकिल जो भी बना 18.6 ईयर में, उसके बाद वो साइकिल रिपीट होना शुरू हो जाता है. ओके, टाइड की रेंज आज 5 मीटर आई थी, फिर किसी दिन 4 आ गई, 3 आ गई, 2 आ गई. जो ये कॉम्बिनेशन था 18.6 ईयर के बाद एग्जैक्टली यही कॉम्बिनेशन दोबारा से रिपीट होना शुरू हो जाता है. इसलिए हम 18.6 ईयर का पीरियड लेते हैं. अब बेटा ये कुछ कुछ समझ में आया? यस सर. अब अगर आप प्रिंसिपल्स ऑफ नेविगेशन की किताब खोलोगे, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, उसमें मून के चैप्टर में जाओगे तो वहाँ आपको एक टॉपिक दिखाई देगा, नोड्स ऑफ द मून. ओके, उसे आज पढ़ना, अगर इंटरेस्टेड हो उसे आज पढ़ सकते हो. आप नेट पे जाके भी, गूगल पे जाके भी सर्च कर सकते हो, तो आपको ये 18.6 ईयर का कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. इसको बोलते हैं नोड्स ऑफ द मून. ओके बेटा? सर. ओके, गुड. लेट्स मूव अहेड नाउ. So now let's insert HAT, highest astronomical level, in this diagram. So here is the HAT, which becomes the reference for vertical clearances. So here we have the bridge.
So this shall be the charted vertical clearance. On the chart, vertical clearances are charted, then they shall be with respect to HAT, highest astronomical tide. Likewise, we have the power cable here. So this height would be the physical vertical clearance. Now, as far as power cables are concerned, depending on the voltage of the power cable, the vessels may require some additional clearance, may not be just be interested in the physical vertical clearance. There may be some requirement of additional clearance because of the current or the voltage that the cable carries. In that case, we could have another term called as safe vertical clearance. Okay, so look at this diagram beta carefully and let me know any doubts which come to the mind. सर ये मीन सी लेवल उसी जगह का मेजर कर सकते हैं ना जहाँ पे टाइड्स नहीं होती हैं? नहीं बेटा, जहाँ पे टाइड होती हैं वहाँ का भी मेजर कर सकते हैं। जैसे इस एरिया में यहाँ तो टाइड्स हो रही हैं, देखो ये मीन लो वाटर स्प्रिंग है, रेड कलर की लाइन। ग्रीन कलर की जो लाइन ये वाली है ये मीन लो वाटर नीप्स है। फिर ये ऊपर वाली लाइन मीन हाई वाटर नीप्स है, ये मीन हाई वाटर स्प्रिंग है। तो हमारा सी लेवल इनके बीच में फ्लक्चुएट करता रहता है इस जगह पे। तो हम अगर इस लेवल को चेक करते रहेंगे, हर एक घंटे हमने लेवल को चेक किया और इनको नोट कर लिया और उनका मीन ले लिया, तो हमारे पास ये मीन सी लेवल आ जाएगा। सो इट कैन बी फाउंड आउट एट ऑल द प्लेसेस वेदर टाइड इज देयर और नॉट देयर। सर किसका मीन बोल रहे हैं आप? ये MSWS, MSW1 इनका मीन लेके जो वैल्यू आई वो MSL है? नहीं बेटा, इनका मीन नहीं। अज्यूम कर लो कि तुम किसी पोर्ट पे चले गए रहने के लिए, ठीक है? वहाँ पे एक बर्थ है और तुमने हैंडलेड लाइन से उस बर्थ में पानी की जो लेवल है, हाइट है, वो चेक करनी शुरू कर दी। पहले दिन तुमने चेक की हाइट, बताओ मुझे कितनी आई हाइट? 1 मीटर। 1 मीटर हाइट आ गई। ओके, अब ये ध्यान से देखना, अभी करते हैं यहाँ व्हाइट बोर्ड पे कैलकुलेट मीन सी लेवल। सो हमने हाइट चेक की, हमें हाइट मिल गई 1 मीटर की हाइट, ठीक है? लेट अस से आपने ये काम शुरू किया 0100 एक पर्टिकुलर डे को, लेट अस से 2022। हम 2022 में हमने शुरू किया कि भाई यहाँ की मीन सी लेवल तो मैंने निकालनी है। 0100 पे हाइट ऑफ आपने चेक की, जो डेप्थ थी पानी की जेटी के पास वो 1.0 आ गई। फिर आपने 2 बजे चेक की, कितनी हाइट आई बेटा? 2 मीटर। 2 मीटर? यस सर। वेरी गुड। इसी तरह आपने 3 बजे की, 4 बजे की, 5 बजे की, पूरे 24 घंटे आप चेक करते चले गए। ये 1 जनवरी थी, 1 जनवरी। फिर आपने 2 जनवरी को भी की, 3rd को भी की, 4th को भी की, 5th को भी की, आप करते चले गए। कब तक करते चले गए बेटा? 2040। कितने साल हो गए? 18 साल हो गए। ये काम रोज करते चले गए आप, बहुत सारी वैल्यूज आ जाएंगी ना बेटा। यस सर। अब इन सारी वैल्यूज का मीन निकाल लो, सारी वैल्यूज का मीन निकाल लो, निकल जाएगा? यस सर। हमने इनका मीन निकाल लिया, कोई भी एक वैल्यू मीन आ गई, लेट अस से मीन आ गया 1.5, ठीक है? मीन Yes, कितना sir. आ गया? 1.5 मीन आ गया। 18 साल की रीडिंग ली हमने, 18.6 टू बी स्पेसिफिक। अब इसका Yes, मतलब sir. ये है कि जो भी वो जेटी है, लेट अस से ये बर्थ थी, यहाँ पे खड़े होके आप हाइट चेक करते थे और ये सी लेवल था और ये सी बेड था। अब ये जो मीन आपका आया वो आया 1.5 मीटर। तो इसका मतलब है जो सी बेड है यहाँ पे उससे 1.5 मीटर ऊपर अगर आप यहाँ पे एक मार्किंग लगा दो, ये मार्किंग लगा दी हमने, ये मार्किंग क्या होगी बेटा? मीन सी लेवल।
वेरी गुड, अब समझ में आया? हाँ सर। दिस इज द मीन सी लेवल। अब तुम बेटा कहाँ पे रहते हो? सर रोहतक। रोहतक। अब रोहतक के रेलवे स्टेशन पे चले गए तुम। हाँ सर, वहाँ पे लिखा हुआ है मीन सी लेवल हाइट ऑफ हाँ, स्टेशन। रोहतक का रेलवे स्टेशन यहाँ पे है, ठीक है। यस सर। अब इसकी जो हाइट है वो हम किससे चेक करते हैं? इसकी हाइट चेक करी जाती है इसी लेवल से। दिस इज द लेवल विच वी टेक फॉर चेकिंग द हाइट। और बताओ बेटा, और डाउट बताओ। क्लियर बेटा? सर जो जो कोई भी हाइट होती है वो तो मीन हाई वाटर स्प्रिंग से मेजर करते हैं ना सर, हम किसी भी लाइट हाउस वगैरह की हाइट होती है। जस्ट इन बिल्कुल केस सही है अगर वहां बेटा। पे उस रीजन में अगर मीन हाई वाटर स्प्रिंग होगी नहीं तो फिर मैं मीन सी लेवल से देखूंगा उसे। मीन हाई वाटर स्प्रिंग तो सब जगह पे होगी ही बेटा। यू आर ट्राइंग टू से इफ वी गो इन ब्लैक सी, वहां पे मीन हाई वाटर स्प्रिंग नहीं है। यस सर। हाँ राइट बेटा, ऐसे केस में हम इसको मीन सी लेवल से चेक करेंगे, पर उस चार्ट में ये मेंशन्ड होगा द हाइट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट आर विद रेफरेंस टू MSL, ये लिखा होगा उस चार्ट में बेटा। ओके सर। ओके, और बताओ बेटा, और डाउट? सर आपने मीन सी लेवल की बात की, बट ये लैंड के लिए जैसे आप बोल रहे थे रेलवे स्टेशन का, तो ये मीन सी लेवल तो हर जगह का डिफरेंट होगा, तो हम कहाँ से मेजर करेंगे? हाँ 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 बेटा, जो भी नियरेस्ट सी है ना उस प्लेस का, जो भी नियरेस्ट सी है वहां से मेजर किया जाएगा। जैसे इंडिया है, इंडिया। अब अगर आप हरियाणा में हो तो जो भी नियरेस्ट सी लेवल होगा वहां से, दैट इज द प्लेस वी विल मेजर द मीन सी लेवल। ओके सर, अंडरस्टूड, थैंक यू। अच्छा सर, मतलब स्टेट से नजदीक का सी लेवल से चेक करेंगे। दैट्स राइट बेटा, जो भी नियरेस्ट सी लेवल होगा वहां से, उस लोकेशन से उसको चेक करेंगे। जैसे लेह लद्दाख साइड हो तो बहुत ऊपर हाइट पे है इतना, तो इतनी हाइट से कैसे मेजर करते होंगे, जैसे ऊपर टॉप पे जाते हैं। राइट। हाँ जी सर। अब कैसे मेजर करेंगे कि हम सी लेवल के मतलब कितना इतनी हाइट कैसे मेजर करते होंगे सर, इतनी दूर जाके ऊपर जाके ऊपर राइट लिखी होती बेटा, है ना। राइट। अब मैं तुम्हें एक आइडिया देता हूँ बेटा। जब घर बनाते हैं तो जो मेसन, जो मिस्त्री होता है, वो ईंटें एकदम लेवल में लगाता है ना, या कभी फ्लोर बनाना होता है, फ्लोर, तो वो एकदम लेवल में बनाता है ना। ढाल देनी होती है तो वो चेक करता है कि 1 इंच यहाँ से कम रखना है, यहाँ से ऊपर रखना है ना, करता है हाँ ना। जी। हाँ वो सर। देखा है कैसे करता है? हाँ सर, वो क्या कहते हैं, वो पाइप होती है, पाइप से पानी भर के करता है। वेरी गुड। वो एक पाइप में पानी भर लेता है, पाइप का एक एंड एक तरफ रखता है और दूसरा एंड दूसरी तरफ रखता है, और वो देखता है कि पानी का लेवल जहाँ पे आ गया वहाँ मार्क लगा देता है। हाँ उसे सर। पता चल जाता है कि भाई मेरा जो लेवल है वो मैच हो गया, अब वो फ्लोर बना देगा। अब बेटा छोटे डिस्टेंस के लिए तो ये पानी का लेवल काम कर जाएगा, बड़े डिस्टेंस के लिए अब हमारे पास और चीज़ें अवेलेबल हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जीपीएस। जो जीपीएस है ये हमें हाइट भी देता है। ओके, ये WGS84 का एक डेटम है जिस पे जीपीएस काम करता है, और ये हमें हाइट भी बताता है कि हम WGS84 डेटम से कितना ऊपर आ चुके हैं। इसी तरह से ऐसे भी इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास जो हमें ये बता सकते हैं कि हम कितना ऊपर या कितना नीचे हैं सी लेवल के। ओके, सो दोज आर यूज्ड। अब उनकी डेप्थ में मैं नहीं जा रहा हूँ, इट विल बिकम टू कॉम्प्लिकेटेड एंड इट इज़ नॉट रिलेटेड टू आवर सब्जेक्ट। यस सर। ओके, सो समथिंग लाइक दैट, ऐसा प्रिंसिपल हम फॉलो करते हैं। ओके सर। So you can see HAT is used for measuring the vertical clearances. Now please have a good look at this diagram. We started from the chart datum. We came right up to HAT, and this entire diagram has been covered during our discussion, with each and every term coming under discussion and having been explained. बेटा जो मैंने आपको आज बुक भेजी थी ना, चार्ट सिंबल्स वाली जो बुक भेजी थी,
उस बुक में भी आपको ये डायग्राम मिलेगी, जो आप डायग्राम अभी स्क्रीन पे देख रहे हो. This is given there also, so you can refer to it. It is the same diagram. Okay, sir. Right. Now we come to tide tables. Okay beta, now we are done with the definitions. अब हमारा शुरू होता है main action. So we will first familiarize ourselves with the tide tables. So everybody should keep tide tables close to them. अगर कहीं दूर पड़े हैं तो बेटा उनको पास में ले आओ. जैसे जैसे हम यहाँ पे tide tables में जो जो चीज़ें हैं उनको डिस्कस करेंगे, you can keep on opening the tide table and see it actually. Because जब हमें tide की कैलकुलेशन करनी होगी तो हमें tide table से वैल्यूज़ निकालनी होंगी. वो तभी निकाल पाएंगे अगर हमें पता होगा कि ये कहाँ दी हुई हैं. So keep the tide tables close to you and we will see each and everything in those tables. Well, different countries have their own hydrographic departments publishing their own tide tables. What we shall be discussing are the Admiralty Tide Tables, as they are the ones that are used in our examination. Now, these Admiralty Tide Tables contain easy to use height, timing, and tidal stream information to support the planning of departure and arrival times. Each volume of the tide tables, referred to as ATT Admiralty Tide Tables, includes daily high and low water times and heights for standard ports, time and height differences for the secondary ports, harmonic constants for all ports where they are known, methods of prediction and information about the effects of meteorological conditions on tides, and additional information on exceptional factors provided for each area. अब बेटा ये जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हो स्क्रीन पे, ये सारी की सारी हम टाइड टेबल में अभी वन बाय वन जाके देखेंगे. सो दिस इज़ व्हाट द टाइड टेबल कंटेन. सो जस्ट गो थ्रू दीज पॉइंट्स एंड आई विल शो यू इन द टाइड टेबल्स वेयर ऑल दीज इंफॉर्मेशंस आर. तो सेकेंडरी पोर्ट्स कौन से होते हैं? ओके अभी आएगा बेटा, अभी मैं बताऊंगा आपको स्टैंडर्ड पोर्ट और सेकेंडरी पोर्ट क्या होते हैं. Okay, let's see these one by one. The ports in the ATT are grouped as standard ports and secondary ports. Standard ports are the ones for which daily tables of predicted times and height of high and low waters are provided in the tide tables. All times in these tables are in the local standard time. Predicted heights are in meters and are based on chart datum or LAT. Secondary ports, on the other hand, are those places or ports for which the daily predictions are not provided in the tide tables. Data required for calculating times and heights of tides at these places, that is the secondary ports, is given in the tide tables after the standard port predictions. Secondary ports are grouped under standard ports with similar tidal patterns. So for each secondary port, there shall be a corresponding standard port, which has nothing to do with the proximity, distance, country, or the geography. It has only got to do with the similarity of the tidal pattern. Okay, so just go through these points one by one and let me know your doubts.
Clear beta? Everything is clear? एग्जांपल दोगे सेकेंडरी पोर्ट्स का? हाँ अभी देखेंगे बेटा, अभी हम दोनों देखेंगे, स्टैंडर्ड पोर्ट भी देखेंगे और सेकेंडरी भी. Let's go. Let's see the standard ports, secondary ports in the tide tables. Has only got to do with the similarity of the tidal pattern. ATT comprises of 9 volumes, each volume covering a different geographical area. And this diagram here gives us the limits of Admiralty Tide Tables. Total 9 of them, numbered from 1 to 8. Volume 1 being split into 1 alpha and 1 bravo, thus making it a total of 9 volumes. Okay, so these are the total volumes of tide tables beta. These are the areas which these tide tables cover. For our examination, the questions are based on only number 1, number 2 and number 3. Right? चलें बेटा आगे. Yes, sir. Great, let's go. Now, the tide table for MMD exam that is used is titled Selected Pages from Admiralty Tide Tables, Volume 1, 2, and 3, 1992, all consolidated in a book to be used for exam. The cover page of that book for examination looks like this, as you can see on your screen. Now, what we shall do is we shall quickly familiarize ourselves with the pages of this tide table which is used in the exam. अब बेटा ये जो बुक हमें एग्ज़ाम में क्वेश्चन जिस पे बेस्ड आते हैं, इस बुक में वॉल्यूम 1, 2 एंड 3 इन तीनों में से सिलेक्टेड पेजेस दिए गए हैं. सारे के सारे पेज नहीं हैं, सिलेक्टेड पेज हैं. तो हो सकता है पेज नंबर 10 के बाद अगला पेज नंबर 20 हो. नेक्स्ट वन कुड बी पेज नंबर 90. सो देयर विल बी मिसिंग पेजेस बिकॉज दीज आर ओनली सिलेक्टेड पेजेस. अगर पूरे के पूरे देते तो ये बहुत मोटी किताब बन जाती. सो वन इम्पॉर्टेंट थिंग, देयर कुड बी मिसिंग पेजेस इन बिटवीन बिकॉज दीज आर सिलेक्टेड पेजेस. दूसरी चीज़ बेटा, ये एक ही बुक में तीनों के तीनों टाइड टेबल्स इंक्लूडेड हैं. 1 भी इसी में है, 2 भी इसी में है, 3 भी इसी में है. इन्होंने बीच में येलो कलर के सेपरेटर्स लगाए हुए हैं जिससे हमें पता चलता है कि अब हम टेबल 1 से टेबल 2 में पहुंच गए. तो ध्यान देने वाली बात ये है कि पेज नंबर 50 इस बुक में 3 बार आ सकता है. वॉल्यूम 1 का भी पेज 50 हो सकता है, वॉल्यूम 2 का भी पेज 50 हो सकता है और वॉल्यूम 3 का भी पेज 50 हो सकता है. तो इस चीज़ का ध्यान रखना है. क्लियर बेटा? Yes. Very good. Let's go ahead. The detailed usage of each part we shall learn as we use them in our subsequent volumes. So the layout of the ATT is you have a cover page which looks like this as on the screen. And on the inside of this cover page itself, you have index of standard ports as you can see in this one. So बेटा ओपन अप, पहला पेज मिल गया ये वाला. Yes, sir. So these are the standard ports for volume 1. Okay, so they are given in alphabetical order और हर एक पोर्ट के आगे, स्टैंडर्ड पोर्ट के आगे आपको पेज नंबर भी दिया गया है जिस पेज नंबर पे वो पोर्ट आपको मिलेगी. Okay, sir. Okay, very good. Let's move ahead.
Then we have this area and time zone diagram. मिल गई बेटा? This is the second diagram which is there. In this one. Yes, sir. Then we have this area and time zone diagram. So this is the time zone diagram. Then miscellaneous information, which includes preface as well as instructions for use of tables. The preface page starts something like this, as you can see. So were you able to find this page? Yes, sir. Very good. In your free time, if you want, you can just go through these pages. Not many pages are there. It will give you the details of what all is there, but not necessary for calculation. Calculation इसके बिना भी हो जाएगी. Let's proceed ahead. Followed by this are the supplementary tables, a set of tables to convert units, giving some arguments for some areas. So these are some supplementary tables. There are series of tables which are contained. Then we come to part 1 of the table. So part 1 of the table contains daily predictions for times and heights of high and low water at standard ports. Now this part 1 page of any standard port for European water volume, that is volume 1, can look somewhat like this. So beta, just go to the Dover standard port in volume 1. You will see this page there. Yes, sir. Okay. The left page carrying this interpolation diagram, right page containing the daily predictions of times and heights of high and low water. So for each standard port, there shall be enough information covering the entire year. So we can pick up for any date of that particular year the time and heights of high and low water. ओके बेटा, ये जो लेफ्ट साइड में डायग्राम हमें दिखाई दे रही है, एक कर्व बना हुआ है. दिस इज व्हाट वी यूज टू कैलकुलेट द हाइट ऑफ टाइड्स. किसी भी पर्टिकुलर टाइम के लिए अगर हमें हाइट ऑफ टाइड निकालनी हो तो इस डायग्राम को यूज़ करके वो हाइट निकाली जा सकती है. कैसे निकालनी है ये हम करेंगे, अभी क्वेश्चन करेंगे. अभी मैं सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ. राइट साइड की जो डायग्राम है, अभी आपके माइंड में बहुत सारे डाउट आ रहे होंगे कि सर ये एक डॉटेड लाइन भी बनी है, एक सॉलिड लाइन बनी है, ये क्या है, ये कर्व जो है ये क्या रिप्रेजेंट करता है. इसमें यहाँ फिगर्स भी लिखी हुई हैं, 0.1, 0.8 फैक्टर, फिर यहाँ पे मीन हाई वाटर नीब स्प्रिंग लिखा है, बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं. इन सबको हम डिटेल में देखेंगे. राइट साइड जो पेज है इसमें आप देखो एवरी मंथ एवरी डे, जनवरी मंथ 1 से लेके 31 तक, फरवरी, मार्च, अप्रैल. नेक्स्ट पेज में अगर जाएंगे तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर अप टू दिसंबर, हमें हर एक दिन के लिए हाई वाटर का टाइम और हाइट, फिर लो वाटर का टाइम और हाइट, ये सारी चीज़ें मेंशन्ड हैं. सो एवरीबडी गॉट इट बेटा? एनीबडी फाइंडिंग डिफिकल्टी अप टू हियर? सर इधर जनवरी से लेके अप्रैल तक का लिखा हुआ है सारा. एंड सेकंड पेज जब मैंने टर्न करा है तो इसमें लिवरपूल के बारे में लिखा हुआ है. Right beta, because these are selected pages. As I told you, some information is missing. हाँ, आपने बोला दिसंबर तक का, तो दिसंबर तक का नहीं, अप्रैल तक का ओनली. That's right beta. जो दिसंबर तक मैं बोल रहा हूँ वो कंप्लीट टाइड टेबल जो होगा ना वॉल्यूम 1 उसमें दिया होगा. यस सर, इधर अप्रैल है. ओके सर. Right. If you see the page numbers, can you check the page numbers, Dover and Liverpool?
Yes, sir. Dover 23, sir, Very good. and for Liverpool 95. राइट, सो 23 to 95 यहाँ पे मिसिंग है, बट मेन टाइप टेबल जो होगा उसमें हमें ये मिलेंगे. Yes, sir. ओके, बट यू डोंट नीड टू वरी. जो भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिया जाएगा उसकी इंफॉर्मेशन आपको इसी बुक में से मिल जाएगी. सो इट विल नॉट Yes. हैपन दैट इट इज इन द मिसिंग पेजेस. Yes, sir. ओके, लेट्स प्रोसीड अहेड. Now, if you use any other volume than the European ports, then this part 1 page will only look like this. It will not have that interpolation curve, tidal curve, which was there in the European port, because in European ports, the tidal curve is port specific. In the other volumes, it is the generic curve, which we shall learn when it comes to tidal calculations. So one very important difference between volume 1 and the other volumes, वॉल्यूम 1 में हर एक पोर्ट के साथ आपको अलग डायग्राम मिलेगी. जो ये ग्राफ हमें मिला था, हर एक पोर्ट के लिए अलग ग्राफ मिलेगा. लेकिन अगर आप वॉल्यूम 2 या 3 में आओगे तो आपको हर एक पोर्ट के लिए अलग ग्राफ नहीं मिलेगा. एक ही ग्राफ है जो सारे के सारे टाइड टेबल में यूज हो जाएगा. सो दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस. Okay. ओके, Then we have part 2, wherein we get data for the prediction at large number of secondary ports. This is in the form of time and height differences referred to one of the standard ports in part 1, and page for part 2 would look like this. सो दिस इज पार्ट 2 बेटा. ये जो डाटा यहाँ पे लिखा है, बहुत सारा डाटा लिखा हुआ है. हम देखेंगे डिटेल में व्हाट ऑल दिस डाटा इज, बट दिस इज यूज्ड टू कैलकुलेट द हाइट एंड टाइम्स एट सेकेंडरी पोर्ट्स. सबको मिल गया बेटा ये डाटा डेली पेजेस के बाद? सर चेक कर रहे हैं. ओके, सर ये वॉल्यूम 1 की बात कर रहे हैं ना हम लोग? हाँ बेटा, सारे वॉल्यूम्स में मिलेगा आपको, 1 में भी, 2 में भी, 3 में भी. Okay. सर ये मिल गया वगैरह पर्टिकुलर किसका है सर, वो बता दीजिए. डोवर का ये करेक्ट है? हाँ बेटा, वो मैं बताऊंगा, डोंट वरी. अभी के लिए तो खाली पेज ढूंढ लो. तो सर ये 26 लिखा हुआ वहीं पे है ना? आफ्टर 235 के बाद में. मस्ट बी बेटा. आई डोंट हैव द बुक ओपन. यू वांट मी टू ओपन द बुक? नो नहीं, ये वो नहीं है. 235 के बाद तो ये साउथ एंड ईस्ट कोस्ट है इंग्लैंड. ये डोवर का है, वेस्ट कोस्ट. ओके, एक मिनट. सर को बताना क्या निकालना मेरे में सर. डायरेक्टली सर पार्ट 3 दे के रखा हुआ है, पार्ट 2 ऐसा कुछ दिया नहीं. पार्ट 2 करके You have to open this India West Coast page. नो बेटा, एनी पेज, any tables. यस सर. So when you go down, you see this is the index of the volume 1. This is the time zone diagram, preface, instructions on the use of tables. Then there are many supplementary tables. Then you see these are the daily predictions. Yes, Okay, sir. ये डायग्राम मिल गई हमें और Yes, फिर ये उसके बाद डेली प्रेडिक्शन मिल गई. सो कीप ऑन गोइंग अहेड. इसके साथ जस्ट This बाद data स्टार्ट हुआ, बेटा. बट हाँ. Right, so this data is what I am talking about.
This हाँ is the ये सर, data यस to, सर, मिल गया, okay. यस सर। Volume 1 में this is on page 304. So you see there are a lot of things mentioned here: high water, time differences, low water, height differences, MHWS, MHWN, okay, all these things. Yes, This is what we use to calculate the secondary port tides. Okay? yes sir. Okay. Then we shall have part 3. Part 3 shall give us information regarding harmonic constants for use with simplified harmonic method of tidal prediction. A typical part 3 page could be looking like this. So अगर आप आगे जाओगे बेटा तो आपको ये भी मिल जाएगा, इसको हार्मोनिक कांस्टेंट डाटा बोलते हैं। Yes sir, ये भी इंग्लैंड साउथ कोस्ट से स्टार्ट है। Right. Of Sealy. So you will see it written there, harmonic constants. ये हम यूज नहीं करते हैं, this is not in second mate syllabus. This will come in phase 1 बेटा। जब आप phase 1 में चीफ मेट phase 1 में आओगे तो फिर आप हार्मोनिक कांस्टेंट को यूज करके भी हाइट्स को कैलकुलेट करोगे। ओके? तो ये होता क्या है सर देखिए? ओके बेटा, दिस इज बेसिकली अगर हमें टाइड्स कैलकुलेट करने हो यस सर, किसी भी लोकेशन में तो दो तरीके हैं हमारे पास। एक तो तरीका है कि कर्व से उसको निकाल लो। ओके सर। कर्व गिव्स अस एन आइडिया कि उस पर्टिकुलर पोर्ट में जो हाइट है वो कैसे वेरी कर रही है। ओके, जब फ्लडिंग स्टार्ट होगी तो पानी कितने लेवल पे, पहले घंटे में कितना पानी बढ़ेगा, दूसरे में कितना, तीसरे में कितना। सो दैट डायग्राम गिव्स अस एन आइडिया। जो ये हार्मोनिक है बेटा, हार्मोनिक में दैट इंफॉर्मेशन इज कैप्चर्ड इन मैथमेटिकल फॉर्म। इसमें डायग्राम तो नहीं है, लेकिन मैथमेटिक्स के हिसाब से हमने फैक्टर बना रखे हैं, उनको हम फॉर्मूले में डाल के यूज करते हैं तो हमें हाइट मिल जाती है। सो दे आर टू मेथड्स टू कैलकुलेट द टाइड्स। ओके सर, ये इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन है एंड कर्व से नहीं है। दैट्स राइट। ओके, लेट्स गो बैक। At the end of the tables, we have the geographical index for each volume. And in the geographical index, all the ports in that particular volume that are contained in that particular tide table are alphabetically organized. So it is easy to enter because of the alphabetical order in which the ports are listed out there. Okay, so beta, just look for this geographical index, next part of the table. Yes sir. Right. In the geographical index, you will find the ports given in the alphabetical order. So अगर आपको नाम से किसी भी पोर्ट को ढूंढना है, okay, तो आप यहाँ से इस geographical index से उस पोर्ट को ढूंढ सकते हो। हर एक नाम के आगे आपको एक नंबर मिलेगा, that is the number for that particular port. okay sir. Okay. सर ये एक बार फिर से प्लीज एक्सप्लेन कर सकते हैं? जियोग्राफिकल इंडेक्स ये सब क्लियर नहीं हुआ सर। ये नंबर मिला हम लोग को, इसके बाद सर इसका यूज क्या है सर? वो देखेंगे बेटा, अभी तो मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि ये इंफॉर्मेशन टेबल में है। अब इस नंबर को कैसे यूज करना है दैट वी विल सी, डोंट वरी। अभी के लिए आपको इतना पता होना चाहिए कि इन पेजेस में एक जियोग्राफिकल इंडेक्स होता है जिसमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पोर्ट का नाम लिखा होता है, और अगर हम उस पोर्ट के नाम पे जाएं तो हमें एक नंबर मिलता है। इतना पता चल गया? यस सर, यस सर, यस सर। अगर मैं आपको कोई नाम दे दूं किसी पोर्ट का तो आप उसका नंबर निकाल सकते हो? यस सर, श्योर। वेरी गुड बेटा, बस अभी के लिए इतना ही करना है। अब उस नंबर से करेंगे क्या, दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट एपिसोड। ओके, सो अभी आज के लिए आपने काफ़ी कुछ सीख लिया। अब यू कैन फ्लिप थ्रू द पेजेस ऑफ दिस पर्टिकुलर टेबल, देखो क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, कहाँ कहाँ पे है, एंड नेक्स्ट लेक्चर व्हेन वी मीट इस इन्फॉर्मेशन को हम आगे भी यूज़ करेंगे। ओके।
Yes, sir. Thank you so much, sir. Okay, you, sir. beta. Great. So we now break off